मिनिट लेट यूट्यूब क्लास रे मु केते मिनिट पाठ पढेबी ताले सब बेले तोर ए नाटक फर्स्ट टाइम तोर एटा गणेबी फर्स्ट टाइम मोर एटा रोशन तोटू बेटर थिला Okay, so hello everyone. I'm Sudipta Simran Ponda, welcoming you all to Vedang Civil Services powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, केमती सब अच्छा तमानकर प्रिपरेशन केमती कौन चली छी एवरीथिंग को माने सब क्लास रे अच्छा जल्दी टिके जॉइन हुआ ओके ओके तल स्टार्ट करिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि सेथिरो आपण माने हो नेचर आसी गलनी क्लास को ग्रेट बाकी पिला सब कहा को एबे चेता आसुनी जते बेले पाखे आसीबो एग्जाम सेते बेले भाबे कि यार हम काहे की फ्री क्लास प्रोवाइड होतला हम काहे की देखु नथिलु हन नै को नेचर तो ओडिसा सिविल सर्विस पय आपण माने जदी प्रिपेयर होउचंती यार एटा त आपनकर रॉ प्राइस ता रही जाई छी बट एनीवे मु त मानु एटा कहि दोउची आपण मानकर अधिकारी बैच जोटा कि प्री प्लस मेंस आपनकर प्री प्लस मेंस वाला बैच $9,999 ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक सामने रे मते कोंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोन अछि क्वेश्चन मते कोंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड रो ब्रेड बास्केट बोली आमे को बायोमास को कहिबा तो क्वेश्चंस अछि ऑप्शन आपनकर कोन अछि ना टाइगा अछि फर्स्ट ऑप्शन तो टाइगा माने कोन को ना बोरियल फॉरेस्ट आपन माने को कहितिली टाइगा मींस एस आमे कोन कहि परिबा ना द बोरियल फॉरेस्ट हने नै को that is also called as the boreal forest also आमे कहि परिबा located in a high altitude that means high latitude रे ये present रहिबो आपनकर कनाडा हैला साइबेरिया हैला सेठी आपनकर ये present रही ओ जगह रे ना कनाडा साइबेरिया clear that is very cold climate with कोन ना शॉर्ट ग्रोइंग सीजन जे कोनोसी सीजन आपनकर जेमिति हमर थाए 3-3 मास हमर रहूची मोस्टली हमें कहि परिबा सब सीजन हम एक्सपीरियंस करूचे तो सेही जगह रे हम कहूचे द सीजन जोडा कि आपनकर कनाडा रे हैला साइबेरिया रे हैला तो सीजन बहुत ही शॉर्ट पीरियड पई थाए तो मेनली हम कहि परिबा सपोर्ट आपनकर कोन करिवो ना कानिफेरस ट्रीज नॉट फूड ग्रेन्स आपनकर किछ सेठी हुएनी हमें कहि परिबा दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर द लार्ज स्केल एग्रीकल्चर बट राइट आंसर इटी ब्रेड बास्केट कथा पचारी छी हमें टाइगा ऊपर को फोकस ना करी कि जदी राइट आंसर को आसीबा दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड को कहिबा नेचर आंसर द दियो
कौन कहबा ना टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहबा बिकॉज आमे जानि छे दीज आर एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट रेनफॉल मॉडरेट कहला माने आपण माने कोन बुझिबे ना 50 to 100 सेंटीमीटर दिस इज द मॉडरेट रेनफॉल हां नहीं म देखो यस और नो यस मैम सो सॉइल आपनकर को टाइप रो रहिथिबो ना भारी माने आपनकर कोन फर्टाइल सॉइल रहिथिबो जोटा कि रिच इन ह्यूमस थिबो तो एक्सेप्ट जदि आपनकर फर्टाइल लैंड न हेइथिबो कोन सॉइल रिच इन ह्यूमस न हेइथिबो देन मते कुह इज दैट पॉसिबल आपनकर एग्रीकल्चर पई तो एग्रीकल्चर पई बेस्ट आपनकर फर्टाइल लैंड ता सहित मने रख कोन ना सॉइल रिच थिबा दरकार ह्यूमस रे फॉर एग्जांपल आपण मान देखिबे यूएसए रो जोटा कि आपन को कहै जाय कोन दैट इज द प्रेरीज यूएसए रो सॉइल को हमें कहू जे को टाइप रो सॉइल देखा जाय ना प्रेरीज दिस इज द सॉइल टाइप इन यूएस ओके PRARI prairies PRARIES देन आपनकर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउ कोन देखा जाय जेमिति आपनकर अर्जेंटीना रे देखा जाय लाइक द यूएसए सॉरी माने अर्जेंटीना रे आपनकर देखा जाय पंपस आपण माने आगुरु सुनिथिबे पंपस नाटा तो पंपस रहुछि आपनकर कोठी ना अर्जेंटीना रे ये देखा जाय क्लियर बुझा पडुछि तो स्टेप्स अलगा टाइप रे हमें कहि परिबा सी आपनकर यूरेशिया रे देखा जाय यूरोप एंड एशिया प्लस सेई के हमें कहूचे सेतेबेले आपनकर कोन ना तो सॉइल टाइप होची स्टेप सॉइल देखा जाय हेंस हमें कहि परिबा द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इज द टेम्परेट ग्रासलैंड नॉट की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें कोन कहिबा ना हेवीली रेनफॉल आपनकर थ्रू आउट द ईयर जति एक्सपीरियंस करूची ताको हमें कहिबा दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक सॉइल आपनकर इथरे को टाइप रो सॉइल देखा जाय ना लैटेराइट सॉइल देखा जाय लैटेराइट सॉइल देखा जाए एंड हमें कहि परबा दैट इज वेरी न्यूट्रिएंट पुअर ड्यू टू द लीचिंग प्रोसेस आपनकर माने अधिक थाए सेथिरे बिकॉज़ द न्यूट्रिएंट कोन ना स्टोर्ड हे कि रुहे इन द फॉर्म ऑफ बायोमास नॉट इन द सॉइल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आसा तो राइट आंसर कौन होची ना द टेम्परेट ग्रासलैंड बायोमास इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल कोन ताको कोंदी मॉली सॉल्स बोली these areas such as the prairies of North America, the pampas of South America, and the steppes of Eurasia are ideal for growing large quantities of wheat and other grains. Hence, the nickname is that. Next question, in which biome, okay, which biome would you most likely find epiphytes? That means the plants growing on other plants in abundance. राइट आंसर कौन हबो क्विक ओके कुआ मते epiphytes are most abundantly found in which biome desert रे बिल्कुल हबनी because desert आपनकर कोन ना extremely low rainfall experience करे हाँ ना नहीं yes तो तुंद्रा एरिया को हमें कौन कहि परिबा तुंद्रा एरिया को कौन कहि परिबा ना दैट इज अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट प्रेजेंस ऑफ द परमीफ्रोस्ट आपण मान को कौन कहितली एनीवन मा गुटे क्लास रे भी कहितली परमीफ्रोस्ट माने कोन ना आपनकर तुंद्रा एरिया को नॉर्दर्न साइड को हिमालयन साइड को आपण माने जति जिबे आपन को सेठी माटी देखिबा को मिलिबनी कारण माटी ऊपरे आपनकर बरफ रो गुटे हार्ड लेयर पड़ी कि थाए एंड ता ऊपरे ही लोक माने चलंती जेन्युइनली आमे कोन माटी ऊपरे चालुछे बट से जति बरफ ऊपरे चलिबे बरफ को यूज करिवे एज द सॉइल एज द अर्थ रो फर्स्ट लेयर भले ताहले आमे ताकू कोन कहूचे ना दैट इज द फेरी फ्रोस्ट बोली आमे कहूचे हैला देन आसिला कोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ऑब्वियसली आपनकर हाई ह्यूमिडिटी and heavy rainfall आपनकर प्रेजेंस अछि that is very dense that is multi layered कोन ना canopy so that's why हमें कहि परिबा tropical rain forest and limited sunlight कोन forest floor रे आपनकर limited sunlight पड़े that's why right answer हमरे कोन चूज करबा ना tropical rain forest quick चलो boreal forest एबे तुमको कहिली next very good evening राधिका
तो मते कुह नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तुंद्रा बायोम फास्ट कौन कहिला ना इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कौन परमाफ्रोस्ट हाँ ना नहीं कुआ कही परमाफ्रोस्ट हेले तुंद्रा एरिया दैट मीन्स द कौन ना नॉर्दर्न साइड को आपण माने पळेबे देन कहिची वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय मॉसेस लाइकेन्स एंड सेजेस व्हिच ऑफ द एबव इज करेक्ट तो एटा 1 एंड एठी आपनकर 2 सेंटेंस एटा मिक्स हे जाइछ टिके मैनेज कर दियो हैला तो या भीतर मते को राइट हबो कोन ऑलमोस्ट आपनकर परमिफ्रोस्ट अछि तो ये आपनकर तो राइट ही हबो तो स्टेटमेंट 2 तो वेजिटेशन आपनकर कोन ना डोमिनेटेड बाय द मॉसेस एंड लाइकेन्स हबोनी की बिकॉज़ आपण माने जानि चंती शैलो रूट्स अडॉप्ट द फ्रोजन ग्राउंड तो रूट जति के शैलो हबो से माने फ्रोजन ग्राउंड को ट्राई करिवे कैच करिवा पई सो लो ग्रोइंग plants that resist cold wind that are the mosses that are the lichens so obviously apanakar both 1 and 2 he gala right let's check the statement 1 and 2 both are right mate next kuh the sclerophyllous vegetation that are had leaved plants is a characteristic feature of which biome ye ko biome ro gote characteristic feature boli ame kahiba कौन कहिछि ना स्क्लेरोफाइलस वेजिटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच बायोम मेडिटेरेनियन और ट्रॉपिकल डेसिडियस और स्टेप और टाइगा व्हाट विल बी द राइट आंसर देखो मेडिटेरेनियन काहे की हबा राइट आंसर व्हाई मेडिटेरेनियन 4 नंबर डी रे नाइ रे 4 नंबर ए हबा राधिका हैला काहे की हबा मेडिटेरेनियन बिकॉज़ इट हैज अ हॉट it has a dry summer and has a mild winters also तो जते बेले बोथ सब जिंस आपनकर सेम लेवल रहे की थिबो जते बेले प्लांट आपनकर कोन प्लांट्स आर वेरी हार्ड वेरी लेदरी कंडीशंस रे थिबे ता ऊपर वैक्स कोटेड लीव्स माने आपण माने पाई परिबे ताको हमें कहि परिबा कोन हां मामा ना ना क्लास रो छ तो करू छ ओके आसा तो कौन कहूली रिड्यूस करिवो जेमि जदी सेई टाइप रो प्लांट आपनकर होई से वाटर लॉस रिड्यूस करिवो फॉर एग्जांपल हमें कहि परिबा आपनकर ऑलिव ट्री जोथि आपनकर ऑलिव ऑयल आसुची तो ऑलिव ट्री को हमें नै परिबा फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन रो होना नै को देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस तो मानकर काहे की होबनी कारण ट्रॉपिकल डेसिडियस रे जो फॉरेस्ट रे आपनकर ट्रीज माने रुहंती द ट्रीज शेड द लीव्स इन अ ड्राई सीजन ओनली आपण मान देखिथिबे खरा दिने कोन हुंदी ना से माने गछरु पत्र झडा दियंती पुनी शीत दिने पत्र कळे एंड जेमिति वर्षा पड़े पूरा गछ आपनकर छनछनिया हे जाय सो लीव्स आर ब्रॉडर इन दैट सीजन they are not actually very hard और waxy condition hard and waxy condition आपनकर मेडिटेरियन फॉरेस्ट आपण माने देखि पारे हैला हां हां नेक्स्ट चलो मते को द टर्म कोन ना lianos and campos refers to the grasslands in which content campos कथा त मानकु कहिली कैंपस कथा कहली को कंटिनेंट को रिलेट करिवो मते को अफ्रीका तो बिल्कुल तम मानकु कहिनी बट तम मानकु यूएसए रिलेट करैथिली ना नाही मते कुह तो यूएसए रो एठी दी दीटा दे देछि ऑप्शन कोटा आपण माने कहिबे यूएसए रो दी दीटा ऑप्शन दे देछि तो फास्ट कम फास्ट सर्व राइट अब फास्ट को हमें चूज करि देबा साउथ अमेरिका एतिकी बुझी की ताकू टिके घोसी की रखिबे आपनकर जो वेनेजुला रे एबे चली छी प्रेसिडेंट को टेकी नै चंदी ह ना नहीं तो एई सब को रिलेट करी के मन रखिथिबो चलो नेक्स्ट तो मते को इंडियन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स इन इंडिया द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इज इंडिया रे मोस्टली वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट आपण माने देखि पारुथुवे दैट इज व्हाट को the most widespread forest type in India that is tropical wet evergreen or tropical deciduous or mountain like temperate mountain the mountain temperate or the mangrove कौन हबा tropical wet evergreen तो बिल्कुल भी हबनी because tropical wet evergreen हमें कोठी पाई परिबा ना जोठी high rainfall होथुबो almost हमें कहि परिबा 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होउतिले हमें ता कहबा दैट इज द वेट एवरग्रीन लाइक एरिया हरा नहीं मते देखो एंड दैट इज वेरी लिमिटेड इन द वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार नॉर्थ ईस्ट इंडिया ए रीजन हमें देई परिबा हरा नहीं नॉट अमेजन कांगो एक्चुअली
कहीं हमनी अमेजन कंगो मते कुह बिकॉज ट्रॉपिकल डेसिडियस हबो तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहले कोन बुझुछ दैट इज द मॉनसून फॉरेस्ट बोली आमे कहूचे 70 रु 200 सेंटीमीटर भितरे जदि आपणकर रेनफॉल होउची ताहाले आमे ताकू कहिबा दैट इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ओके सो तार ट्री शेड ऑलरेडी कहिची को टाइम रे से लीव करंती ताकर लाइक ड्राई करंती हना नहीं एडब्ल्यू टाइप क्लाइमेट आज्ञा तो माउंटेन टेम्परेट आपनकर कोन हबो ना हिमालयन रीजन रे आपण माने माउंटेन पाइबे हिमालयन रीजन रे आपण माने माउंटेन टेम्परेट पाइबे ओके मैनग्रोव ऑलरेडी आपण माने जानि छथि कोन पाइबा ना हेंताला वन सो हेंताला वन हेले आपण माने जानि छथि कोस्टल एरिया तो कोस्टल एरिया मीन सुंदर मने पडुची सुंदरी वन को हम रिलेट करि परिबा ओडिसा रो भीतर कनिका को भी रिलेट करि परिबा सो कोस्टल एंड डेल्टाइक रीजन रे हमें मैनग्रोव पाई परिबा हना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मते को सोलो फॉरेस्ट हैला कोन ना सोलो फॉरेस्ट आर यूनिक टू व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया तो सोलो फॉरेस्ट आपण माने कोठी देखि परिबे देखो हिमालयस रे आपण मानकर टोटल डोमिनेट करि कि रखिछि कोन ना अल्पाइन सो अल्पाइन फॉरेस्ट आर देयर इन द हिमालयन रीजन राइट तो वेस्टर्न घाट रे हमें कोन पाई परिबा ना सोलो फॉरेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सोलो फॉरेस्ट ना द फॉरेस्ट at high elevations of the southwestern ghat और हमें कहि परिबा that they are a very unique mosaic of evergreen forest जोडा को हमें सोला बोली कहूचे in the valleys of the grasslands and the hilltops रे आपण माने ताको पाई परिबे that is very important for the water retention and biodiversity so एमानकर काम कोन ना water retention capacity आंकर अधिक थाए water retention capacity अधिक थाए ओके सुंदरबन ऑलरेडी आपण मानकू कहि देली दे आर मैनग्रोव फॉरेस्ट आपनकर टोटल टा कवर अप करि कि रखिछि सुंदरबन को ओके वर्ल्ड रो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट हमें कहि परिबा दैट इज द सुंदरबन ओके चलो नेक्स्ट मते को व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया को जदि आपण माने अकाउंट करूछंती आउट ऑफ दैट मते कुह द स्टेट इंडिया केते आपणकर फॉरेस्ट कवरेज करूछि द स्टेट सॉरी इंडिया रा को स्टेट हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज करूछ ऑलरेडी आपण माने जानि चंती मु जानि छ सब मारिबो अरुणाचल प्रदेश मु जानि थिली सब मारिबो देखो मध्य प्रदेश भी आपणकर हाईएस्ट करूछि माने लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश पाखरे अछि बट जदि परसेंटेज रे देखिबा ताहाले टोटल जियोग्राफिकल एरिया यार बहुत ही लार्ज रहिबा बट स्टिल मिजोरम टू कम कोन ना मिजोरम पाखरे ऑलमोस्ट 84% को केस पचारि छी देखो क्वेश्चन कहै छी व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया दैट मींस टोटल एरिया केति की अछि ता भितरु तारो जियोग्राफिकल एरिया माने निज से स्टेट रो जियोग्राफिकल एरिया ठू तारो फॉरेस्ट कवरेज अधिक पचारि बुझी पाला कोन कहिली तो दैट अकॉर्डिंग 84% सहित मिजोरम विल बी इन द टॉप ओके एंड जो अरुणाचल प्रदेश आपण कहउछंदी दैट इज आल्सो वेरी हाई फॉरेस्ट कवरेज इन टोटल इंडिया रा को स्टेट पाखरे जदि हमें कहि परिबा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज अछि ताहाले हमें कहि परिबा बट हियर ओडिसा पाखरे तो बहुत ही कम कहि परिबा एमानक कंपैरिजन जस्ट 33% ओके नेक्स्ट चलो यस चलो मते गुह नेक्स्ट the Terai region in northern India is best described as quick mate kuha the Terai region is best described as what Terai region को हमें कौन dry कहिबा की या फिर कहिबा very marshy grassland and the forest are covered in the Terai region सेटा कहि परिबा की जोटा की आपनकर शिवालिक हिल को नै की अछि कोठी ना शिवालिक हिल को हम रिलेट करै परिबा दैट इज द Terai Am I clear? Shivalik hills, that is the high water table, swampy conditions,
thick grasslands and the moist forest आमे कहि परबे that is very rich in the biodiversity, right? चलो cold desert आपनकर बिल्कुल हबनी, high altitude cold desert हबनी because Ladakh and Spiti Valley को आमे relate करे परिबा काहकू ना Ladakh and Spiti Valley को relate कर देबा. What is the coniferous forest belt कहले कोन बुझिचो ना Himalayan altitude रे आपण माने ताकू पाई परिबे. That is terai lies in the foothill region. But coniferous आपनकर कोन ना ये आपनकर altitude high altitude रे आपण माने ताकू देखि परिबे. High altitude, right? चलो next. मते कुह which tree species is most commonly found in tropical dry deciduous forest of central India? Tell me. जल्दी कुह मते कौन कहि which tree species is most commonly found in the tropical dry deciduous forest of central India? Tropical dry deciduous forest कहले हमें कौन कहि परिबा कि one and only टिकू because that requires 72 100 centimeter rainfall एतिकी दरकार नहीं मते खो and एही dominate species को जगह रे मिले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सेठी आपण मानन को देखिबा को मिले like where ना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ए जगह रे आपण माने देखिबा को पाइबे the teak trees plentifully. Okay, and what's about the ebony? Have you ever heard the word about ebony? This is a tropical evergreen tea. ताकू हमें कौन कहूचे ना ebony. Right? Then आपण माने देखंतु pine कहले कौन बुझिबा ना that is found in temperate and mountain regions. मोहगानी कहले कौन बुझुचो ना the exotic species कौन that is not naturally occur the exotic the special किछि special species को नहीं कि हमें कहूचे these are the exotic species. Okay, चलो next. मते को biodiversity and wildlife कोठिकारा focus on the Odisha and India. Similpal Biosphere Reserve is primarily known for which forest type? अच्छा मते को Similpal Biosphere Reserve रे आपनकर को टाइप रो फॉरेस्ट देखिबा को आपण माने पांती क्विक alpine forest only तो मानु कहिची that is present in the tundra area in the snowfall area. That means the alpine forest occur above the tree line in the high mountains that is only found in the Himalayan region. और नहीं मते को and हमें कहि परिबा that cannot found in Odisha that is in the कोन ना Himalayan region. Okay, after that tell me what will be the right answer? Obviously Odisha ra forest type आपनकर कोन कहूची this is tropical moist deciduous forest. और नहीं तो tropical moist deciduous जते बेला आपनकर आसीबो that is dominated by the sal forest, the sal tree. Here we can say right answer कौन होची ना जोटा को साल को हमें कौन कहूचे तार botanical name is the Sroi robusta. Okay, कौन कहूचे it is Sroi robusta. Okay, the botanical name मन रखिता. Dry thorns from littoral they are totally not, they are not into it. Clear? चला next मते कहिबो मते को the red sanders. Okay, what the question is asking about the red sanders, that means the Pterocarpus santillanus is naturally found in which region? Quickly go Eastern Ghat, Western Ghat, Himalayas, Satpura range. कोठी हबो जल्दी. The red sanders पचरिछि is naturally found in को जगह रे mainly in the Andhra Pradesh रे ये देखा जाए that means हमें कहि परिबा कि Eastern Ghat बोली. Yes, these are the endemic species of the southern Eastern Ghat. Mostly Eastern Ghat को relate करि परिबा that means Andhra Pradesh सहित spread है कि अछि. Clear? चल next.
मते कुआ व्हिच एनिमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा. अच्छा एटार आंसर समस्त जानी थिबो. आई होप दैट. मते कुह व्हिच एनिमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ द ओडिशा. ओडिशा रो स्टेट एनिमल कोउटा. Which animal is the state animal of Odisha? Quick. Nature. Radhika. Answer दियो. देखो ब्लैक बक आमे कहि परिबा तो स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश. एंड ब्लैक बक जदि कोठी देखा जाय आपण मान जानि संदी कोणार्क रो मेराइन ड्राइव रे आपण माने देखि परिबे रोड रे. एंड द प्लेन लैंड आमे कहि पारुचे ब्लैक बक रो कोन गंजाम लैंड को गंजाम प्लेन कोठी रिलेट करे परिबा. बट ओडिसा रो कोन कहूची ना स्टेट एनिमल होची संबर डियर. कौन कहबा ना संबर डियर. वेरी गुड नेचर. तो साइंटिफिक नेम संबर डियर कौन होची ना रुषा यूनिकॉलर. द बायोलॉजिकल नेम रहुची रुषा यूनिकॉलर. क्लियर. आठ कैपिटल हबो फास्ट सबले कैपिटल भूल भाल कर दोची मु. प्रेरणा मैडम देखिए मैम कौन करूचंती आपण. अरे बायोलॉजी स्टूडेंट हाउ कैन यू राइट लाइक दिस. आसा क्लियर. So this is the largest deer species in the world. Next iba world कौन कहूची largest deer species in India. मते को भितरकनिका मैंग्रोव्स आर फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ. भितरकनिका मैंग्रोव्स आर फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट. कहार कंजर्वेशन पाई क्विकली मते को. बलराम बारिक. ओके लेट्स चेक योर आंसर. कौन सब आंसर देइछ मते को ना भितरकनिका मैंग्रोव्स आर फेमस फॉर कंजर्विंग द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. रॉयल बेंगल टाइगर हेले आपण माने कोन कहि परिबे. रॉयल बेंगल टाइगर हेले आपण माने सिमिलपाल सहित रिलेट करै परिबे. हां ना नहीं मते को. बट हियर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. क्लियर. चलो नेक्स्ट. मते को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड is predominantly found in which terrestrial ecosystem. Quickly कोटा हबा राइट आंसर. मते को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड inhabits where. डेजर्ट एंड ड्राई ग्रासलैंड रे हबो की यस और नो मते को. देखो जेते बेले आपण मानु को कहिची ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दैट मींस ये आपनकर डेजर्टिक कंडीशन रे ड्राई कंडीशन रे रहि परिबो. that prefer a open landscape and with a short grasses. जोटा कि आपण माने कोडे डेजर्टिक कंडीशन रे पाई परिबे. राजस्थान रे हेला गुजरात रे हेला महाराष्ट्र हेला इन दैट एरिया आपण माने टी कोन देखि परिबे कि दे कैन सर्वाइव इन दैट ह्यूमिडिटी इन दैट क्लाइमेटिक कंडीशन and they are critically endangered species. IUCN रे माने ऐड हे कि अछंती as the critically endangered species रे. क्लियर. चलो next wet evergreen forest. These are different आपण माने they are very dense canopy and alpine tundra हेले they are very tundra आसी गला माने cold area रे ही आपण कर रहि थांती हैला. not suitable for the bustard. Bustard माने only आपण कर desertic condition रे रहिबे. Next mate kuha the ecotone is best defined as. What do you mean by the ecotone? And the ecotone is best described as what? Suryakant Behera answer टिके दियो. कौन कहूची ecotone refers to. देखो polluted region सहित ecotone रा दूर दूर तक किछि भी रिश्ता नहीं. Because pollution is the environment factor, environmental condition, not as a ecological zone. So ecotone is the nature future. आमे कहि परिबा nature और feature को नेकी. So the transition zone between two ecosystem that is the ecotone. So ecotone is the junction area where we can say the ecosystems meet. माने example आमे नै परिबा forest ecosystem, grassland ecosystem. They meet together. आमे कहि परिबा they are the ecotone zone. River and land दीटा जगह दे interface होचंती आमे ता कहबा this is also a ecotone zone. Okay. Next. मते कुह which of the following adds nitrogen to the.
which of the following adds nitrogen to the soil naturally? Quick answer diyo. Which of the following adds nitrogen to the soil naturally? Option first one ଦେଇଛି death of vegetation. Okay, then second one ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହୁଛି nitrogen to the soil. हाँ vegetation जेकोसी vegetation or death हेले nitrogen तो automatically soil को आसी जाए. Excretion of the urea by animals, that's also true. Use of coal by humans, no. Coal सहित हमारा natural vegetation रे किसी role ही नहीं. So 1 and 2 होगा only right answer. Option A. Very good. Next question मते कहो. Ecological succession starting on a bare rock is known as. Bare rock रू अपन करो ecological succession start हुए. हाँ ना नहीं मते कहो. So ताकू हमें कौन कही परिबा? मते कुह बेयर रॉक रु स्टार्ट हेले हमें ताकू कौन कहि परिबा? क्विक हाइड्रोजियर is different, that is the aquatic environment को हमें हाइड्रोजियर कहूचे, राइट? aquatic जते बेले पानी कथा आसीबो वाटर कथा आसीबो कोन ताको हमें कहिबा that is the aquatic. तो हाइड्रोजियर related with the aquatic one. Clear? Aquatic environment को like the ponds, like the lakes, ए मानु को हमें कहिबा. There starts with what? ना phytoplankton. आपण माने सुनी थिबे what? The phytoplankton रो माने start होंती. But क्वेश्चन अछि इकोलॉजिकल सक्सेशन आपण करो कोठु स्टार्ट होची बेयर रॉक रे ना लिथोस्फीयर रो. तो लिथोस्फीयर कोन कहूची ना बेयर रॉक सरफेस को हमें कहूचे दिस इज द सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सरफेस. एंड हमें कहि परिबा द पायोनियर स्पीशीज की आसंती ना लाइकेन्स एंड मॉसेस आर द पायोनियर स्पीशीज हियर. हैला क्लियर? एंड व्हाट डू यू मीन बाय द जामोजियर? जामोजियर माने कोन? केबे आगुरु वर्ड सुनिचो ना जते बेले सक्सेशन ऑफ सैंड डून्स आपण माने जानि थिबे. कोनी हे गला प्रॉब्लम. सक्सेशन ऑफ सैंडस्टोन जेरोसियर आपण माने जानि सन्दी पूरा ड्राई कंडीशन है कोन. डेराडून एग्जांपल ऑफ सैंडस्टोन्स. यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हाट इज बायोचार यूज्ड फॉर इन एग्रीकल्चर? बायोचार हम यूज करछे फॉर एग्रीकल्चर. सो व्हाट इज दिस? कोथि पय यूज करूछे ताकू मते को. जदि हमें एग्रीकल्चर यूज करूछे दैट मींस आपनकर सॉइल फर्टिलिटी क्षमता को बढ़ेबा लागि नियति हिथिबो ना इंप्रूव करिबा लागि सॉइल फर्टिलिटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करिबा लागि. And what is the carbon sequestration? Quick. Now water retention and nutrient holding capacity को बढ़ेबा लागि हमें करे. That provide the habitat for beneficial कोन microbes and हमें कहि परिबा the stores carbon in soil for long periods like climatic कोन mitigations को हमें कहि परिबा. नेक्स्ट चलो देखो टू एक्ट एज ए पेस्टिसाइड हेले हम एग्रीकल्चर यूज कोन पे करबानी. क्वेश्चन रे डिमांड को देखो ऑप्शन पढ़ले ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर दो. टू इंक्रीज वाटर इवापोरेशन जदी हेइ जिबा हमर एग्रीकल्चर फ्रूटफुल केमथि हबो. प्लांट रु तो सब इवापोरेशन हेइ कि गैस ही पळेबो वाटर रा न नहीं. तो टू इंक्रीज सॉइल एसिडिटी बिल्कुल हो तो गोटिए फिजिबल कंडीशन आसुची ऑप्शन 2. अरे आगो को जा पहला के चलो. सो इन ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन ओके मते कुह व्हिच लेवल कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी. टेरेस्ट्रियल फूड चेन रे आपनकर मोस्ट नंबर ऑफ एनर्जी कोठी रुहे कोठी यूज हुए. क्विक इन द टेरेस्ट्रियल फूड चेन व्हिच लेवल कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी. क्विक ऑब्वियसली स्टार्टिंग लेवल रे कारण आपण माने जानि संती हमें सब बेले कोन कहूचे ना पिरामिड्स आर
कौन 10% लॉ अकॉर्डिंग जेतेटा लेयर ऊपर को जिबे सेतिके 10% आपनकर लॉस ही जिवो सपोज एठी आपनकर 100 अरे एठी आपनकर केते 1000% अछि एठी आपनकर 100% हे जिवो देन आपनकर एठी 10% हे जिवो देन आ ऊपर को ले आपनकर 1% हे जिवो सो 10% लॉस ही जिवो हने नहीं को सो फास्ट लेवल ले सब बेले तार प्रोड्यूसर लेवल ले एनर्जी सब बेले हाई रही पारे नहीं मते को बिकॉज़ सोलर एनर्जी हैला सपोज प्रोड्यूसर्स हमें जानचे कोन एज अ ग्रीन प्लांट्स द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट करंती सोलर एनर्जी को इनटू द केमिकल एनर्जी फॉर द बेस्ट ऑफ द फूड चेन तो स्टार्टिंग रो आपनकर मैक्सिमम एनर्जी रहइबो देन आपनकर ऑलवेज ऑफ राइट वेरी गुड सोनू ऑलवेज ऑफ राइट एनर्जी लेवल आपनकर हबो एंड ऑफ राइट रे आपनकर 10% से लॉस ही हिजिबो दैट्स इट हना नहीं चलो नेक्स्ट मते कुहा द खराई कैमल्स कौन कहिछि ना खराई camels known for their ability to swim in sea water are found in गोटे टाइप रा camel जो माने sea water रे माने कोन पहरी भी पारिबे ते माने वेरी गुड कोठी हमें ताको देखिया को पाउछे ना रन ऑफ कच्छ रे देखिया को पाउछे देखो चिलिका लेक रे तो हबनी बिकॉज़ camels are not there सुंदरबन नुवा थर्ड डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ तो थर्ड डेजर्ट रे कोन पे हबनी रन ऑफ कच्छ रे कोथि पई हबा मते के कहि परिबो थर्ड रे काहे की हबो नाही बिकॉज़ होम माने आपनकर थर्ड डेजर्ट रे हमें कोन कहि परिबा ना जो कैमल टाइप देखा जाय ताको हमें कोन कहै छै ना बिकेनेरी एंड जैसलमेरी कैमल सेठी देखा जानती को कैमल बिकेनेरी कैमल अरे छड़ बिकेनेरी कैमल एंड आपनकर कोन जैसलमेरी कैमल देखा जांदी थर्ड डेजर्ट रे तो रन ऑफ कच्छ रे ओनली आपनकर हेई परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुआ ना द Namdapha National Park is unique because it spans from the Namdapha National Park is unique because ये spread करूची कोठु को जाय मते कहिलो जल्दी ऑप्शन ए वेरी गुड दैट इज फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू अल्पाइन क्लाइमेट को से कोन डिनोट करिवो सो 200 मीटर टू ओवर 4500 मीटर पर्यंत वेजिटेशन चेंज होची यार फ्रॉम अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल फ्रॉम टेम्परेट फ्रॉम द अल्पाइन इट कैन वेरी ओके नेक्स्ट चलो मते को व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक वेरी गुड बढ़िया क्वेश्चन टे पचरला तमान को कहि छि सब बेले कोन कहइबो ना रेड डाटा बुक स्टैंड्स फॉर देखो WWF दिस इज नॉट ए गवर्नमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ताकू छाडी दियो देन आसा आपनकर कोन ए जो WWF आपनकर करे कोन ये कंडक्ट करे कोन अवेयरनेस ऑफ द फील्ड प्रोजेक्ट रो सो ये पूरा आपनकर डिफरेंट वन आयुषियन UNEP साइट्स ए तीनटा आपन मान जानि सदी गवर्नमेंट रो बट आयुषियन कोन करूछि ना आयुषियन रो रेड डाटा आपन माने सुनिथिबे से आपनकर जेते थ्रेटेंड स्पीसीज मानकू से रेड डाटा बुक रे नोट करिक रखंती सो दैट किछि आगु को किछि जनरेशन गला परे आमे किछि स्पीसीज विषय रे जानिबा को चाहिले पाई परिबा दैट इज ग्लोबली ऑथराइज हे कि आपनकर अछि UNEP आपनकर कोन करछि ना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से आपनकर कोन करछि ना फोकस करछि एनवायरनमेंट पॉलिसी ऊपर ग्लोबल प्रोग्राम्स ऊपर आपनकर करिवो साइट्स कहले कोन बुझुछो ना रेगुलेट करिवो कोन ना इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेजर्ड स्पीसीज मानकू दैट इज डू नॉट पब्लिश द कंजर्वेशन स्टेटस लिस्ट पब्लिश के करिवो ना रेड डाटा बुक आपनकर आईयूसीएन रो रेड डाटा बुक करिवो साइट्स ओनली कोन ना रेगुलेट करिवो क्लियर चलो नेक्स्ट मते कुआ कोन ना मियावाकी मेथड द मियावाकी मेथड इज अ टेक्निक रिलेटेड टू व्हाट इज दिस मियावाकी मेथड एंड ये टेक्निक रिलेट करूछ कहा सहित हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रिएटिंग डेंस अर्बन फॉरेस्ट कोस्टल डिसैलिनेशन डीप सी माइनिंग कहा सहित हम रिलेट करूछे कहा सहित ना विथ द डेंस अर्बन फॉरेस्ट सहित ना मियावाकी मेथड माने कोन कहूची ना इट इज डेवलप्ड बाय द अकिर मियावाकी दैट मींस जापानीज वर्ड एटा हैला अकिर मियावाकी ताकू डेवलप करथिले दैट्स व्हाई तांकर ना अनुसार एटा दे दैछि मियावाकी कोन ना मियावाकी मेथड बोली सॉरी मियावाकी मेथड बोली कारण तांकर ना रहितिला अकिरा मियावाकी क्लियर से जने जापानीज थिले एंड डेवलप करथिले दैट्स व्हाई एटा रहिछि मियावाकी मेथड बोली एंड एथरे कोन हुए ना इंप्रूव करा जाय प्लांटिंग रो क्वांटिटी को
माने नेट सपोज गोटे जगह रे आपनकर किछि नेटिव स्पेसीज आपण माने पाइले डेंसिटी भी तांकर अच्छी भलो आमे देखु जे को टाइप रो क्लाइमेट रे ये बढ़ी पारुसंती तो सेम टाइप रो प्लांट को हमें उठे कि नेबा एंड सेई टाइप रो क्लाइमेट रे हमें जदि ताको पूरी प्लांटेशन करूछे ताहाले से मेथड टा होउची मियावाकी मेथड क्लियर दैट रिजल्ट रे आपनकर कोन आसीबो ना रैपिड ग्रोथ एंड हाई बायोडायवर्सिटी आपनकर बढ़ी बढ़ी चलीबो ओके जो थे अर्बन एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स आसुची इंडिया रा नेक्स्ट मते कुआ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज कॉफ related to UNCCD focuses to 25 नंबर क्वेश्चन केते बेला आनली तमे ए कहिलनी डायरेक्ट 25 नंबर ए केमती कहिलो हां सोनू आसा मते कुह द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कफ रिलेटेड टू UNCCD फोकसेस ऑन देखो क्लाइमेट चेंज ऊपर आपनकर आसीबनी क्लाइमेट चेंज ऊपर आपनकर की आसीबो ना UNFCCC ये आपनकर क्लाइमेट चेंज ऊपर आसुची हां ना नहीं कुह मते हां तो डेजर्टिफिकेशन रे हमें कहि परिबा UNCCD को बिकॉज़ यूनाइटेड नेशंस कोन UNCCD रा फुल फॉर्म लेखो यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन okay that focuses on the land degradation focuses on the drought mitigations focuses on the sustainable management माने sustainable land management को नहीं clear biodiversity बिल्कुल हबनी बिकॉज़ आपण मान जानसंती biodiversity पे हमें कोन जानछि ना CBD कोन convention of biological diversity that one is the then आसुची ozone depletion पे आपण मान जानसंती Montreal protocol कहिथिली आगुरु लेखैसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट ए सब आपण माने रिलेट करे पारिबे ओजोन डिप्लीशन सहित सी कोन कहूची ना द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस कॉप that is related to the UNCCD United Nations Convention of the Combat Desertification is the supreme governing body of that convention. Its purpose is to review the implementation of the convention which explicitly focuses on combating desertification and mitigating the effect of drought through national action programs. That's it. Clear? लोपा बहुत जल्दी आज क्लास को तमे आछो सोनल भी बहुत जल्दी क्लास को आछ कोन करबी मु एथरे लोपा एंड सोनल एते जल्दी सब क्लास कोन पे आछो कोडी के अच्छा तो एटा तो पुरानाटा लगे देछि मिस्टेक रे बट अगेन तम मानक पई कहि दोछि अधिकारी बैच आपण मानकर आसी जाईछि प्ले स्टोर रे आपण माने पाई परिबे माने वेदांग ऐप रे आपण माने पाई परिबे अधिकारी बैच जहार प्राइस रहउछि 9999 ये आपनकर प्री प्लस मेंस पूरा लेटेस्ट वन ओके अच्छा मु क्लास करथली बोली आसी गला देखिया पाई बाकी इंटरेस्ट नाही पाठ साठारे या तो कोन या तो कथा हो चलो थैंक यू सो मच अगेन बाकी ये रहिला आपनकर वेदांग सिविल सर्विस रा टेलीग्राम चैनल आपण माने एठी जॉइन हे परिबे आपण माने कनेक्ट हेबे ए क्लास रा पीडीएफ पाई तो सर माने मु सब मैडम माने आपनकर ए क्लास रे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप रे पढुछि सरी गला एते जल्दी हां ओसीएस क्लास जल्दी ही सरी जाउछि बिकॉज़ वो देखु ना बहुत संख्या रे पिला अछंती सेमानकर रेस्पोंड बढ़िया आसुची हैला चलो एमिति किछि नाही क्वेश्चंस अल्प आनी थिले सेथिला ओके चलो thank you so much have a good day take care of yourself but first of all do prioritize your parents this would be your first priority no one else in the world dekha haba rati 10 tare new geography questions be ready for that thank you bye bye take care